We are live with another session of Ideas for Innovation. My name is and today we are going doing a session on inclusion and why do we need to prioritize inclusion in our country. हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी हमें measures लेने की ज़रूरत है जहाँ पे हमने um, जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग जिसमें हमारी women जिसमें हमारे people from the rural a lot of them needs to be involved as part of our mainstream economic well-being. So today I'm really glad that I'm joined by Ayesha Raza, who is the CEO and founder of Abe Khao, which is a social enterprise. We Aisha as we ask her, okay, what's the concept behind Abe Khao? How did she come up with this idea? How is she working as a social enterprise to prioritize inclusion? Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me today. You are welcome. So थोड़ा सा हमें अबे खाओ के बारे में बताएं कि the idea of अबे खाओ as a social enterprise कैसे आया? What particular minority group? Right. So whenever I talk about a big cow, and it's a journey. A big cow is more of an accident. So I'll start with my background. I'm a coda. Language is my mother tongue. And in 2018, we started a big cow in a form of a very small push cart. And at that time, we didn't have this thing in mind that we are going to start a startup or maybe it's going to become a social enterprise. It was just a project we were testing. And it was just a push cart. And within 20 days of launching the business, we were all over the national newspaper and everybody loved the idea. And later on, it really gave us the confidence to launch it officially. And in 2019, we launched our first food truck. And at Abikha, customers embrace deaf culture and place their orders in sign language. Abikha is creating economic opportunities for the 12 million deaf and hard of hearing youth in Pakistan. बिल्कुल सो ये 12 मिलियन इज अ ह्यूज फिगर और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम जनरली in our mindset we need to create also awareness around the fact what does inclusion actually encompass. We do have a slide there which we would like to play. But इसमें मुझे ये बताएं कि जब हम ये एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं जब हम उनको ये बात करते हैं कि हाउ आर वी मेकिंग आवर स्पेसेस मोर accessible. Now, there are different kinds of accessibility, but I want you to, just touch base on each aspect and just tell for our audiences कि किस किस्म की different barriers होते हैं accessibility के और फिर we'll discuss possibly the solutions that can also come when we are trying to overcome these barriers. Right. So whenever it comes to accessibilities, I've highlighted few areas. और अगर मैं एक एक करके बात करूँ तो हम सबसे पहले तो communication barrier है because obviously अगर तो if the individual is either deaf or hard of hearing, so the at workplace people should know basic sign language और उनके साथ interact करना आना चाहिए. Even when we talk about sign language, people usually associate sign language as the language of disabled people कि हमें ज़रूरत नहीं है. But I think हम खुद भी बहुत सी जगहों पे sign language use करते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं है और वो it's quite easy to learn और हमें पता भी नहीं होता कि हमें बहुत सी चीज़ों की sign language already आती है. फिर व्हेन इट कम्स टू फिजिकल बैरियर फिर यहाँ पे हमारे पास इस तरह के अफराद आ जाते हैं जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी हो जैसे रैंप लगवा देना और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि पूरा जो ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबके लिए सॉरी उस इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल हो चाहे वो रेस्ट रूम हो चाहे वो कॉन्फ्रेंस रूम हो या मीटिंग रूम हो.
सिस्टमैटिक बैरियर में हम पॉलिसी भी की भी बात करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास वेज भी आती है कि आइदर वी आर डूइंग जस्टिस कि जस्ट बिकॉज द इंडिविजुअल इज डिसेबल हम उसको क्या एक इक्वालिटी के बेसिस पे या उसकी टैलेंट के बेसिस पे उसको पे कर भी रहे हैं कि नहीं एंड और इसके अलावा लास्टली अब क्योंकि आई थिंक ओवर द लास्ट डेकेड things have changed a lot. अब it's a lot more easier कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को एम्पावर करें. ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 1.3 बिलियन पीपल इन the entire world with different form of disability, which makes it like around 15 to 20% लोगों को पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरह की डिसेबिलिटीज हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देर आर ओनली फॉर लाइक आई एम कोटिंग अ फिगर फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि सिर्फ 4% ऐसे बिजनेसेस हैं जो इनकी एक्सेसिबिलिटी और इनकी इंक्लूजन के ऊपर काम करें. लेकिन ये सारे बैरियर्स तो एक तरफ है और सबसे ज्यादा जिस चीज पे हम बात करते हैं दैट इज एटीट्यूडनल बैरियर. यू नो वी सी इफ अ पर्सन इज हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ और उसको किसी और तरह की डिसेबिलिटी है सो हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देम इट रियली मैटर्स and how we treat them, how we are dealing with them. And it is very important कि आपको पता होना चाहिए कि आप उनको offend ना करें. आप उनको rather they are looking for the environment which should empower them. They are not looking for sympathies. अभी तक इतने सालों में जो हमने काम किया है with deaf and hard of hearing individuals, they are not looking for sympathies. They are looking for environment जहाँ पे उनकी skills पे काम हो और या उनके लिए enabling environment create किया जाए. बिल्कुल। और आई थिंक आयशा जो आप बात कर रही हैं वो इस तरीके से भी वैलिड है in our if societal construct we see that a lot of these all of the five things that you have mentioned, four out of these five things are actually solvable with an intervention. ठीक है, आप सिस्टम्स बेहतर बना सकते हैं जहाँ पे एक कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग हो. आप फिजिकल बैरियर्स के लिए किसी भी किस्म का एक जिस तरह हम बात कर रहे थे व्हील चेयर बाउंड या ब्लाइंड होते हैं उनके लिए इस तरह के इजीली एक्सेसिबल रैम्प्स की अवेलेबिलिटी हो. फिर communication in terms of and speak about sign language, communicating their basic needs, so that too is a very act-led intervention. टेक्नोलॉजी जाहिर है कि किस तरीके से हम मैसेज कम्युनिकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, ऑल ऑफ दीज फोर थिंग्स वेरी इजीली एड्रेसेबल. बट जो एटीट्यूड्स चेंज करने की बात है, व्हेन we make this conscious attempt, like you were saying, that end to end of for somebody who is hard of hearing or for somebody who is deaf, is that they would be in that space जहाँ पे उनको एक एटीट्यूड का सामना करना पड़ेगा ना. उनको घर से बहुत सारे बच्चे हमने इंटरेक्ट किया है, यू एंड आई हैव बोथ वर्क विद देम, they don't get that kind of support structure. When they have to go to schools, they don't find that kind of support. When they have to go in for a medical emergency at hospitals, they don't have such ways and Exactly. mechanics in which they can convey their message, right? और इसी तरीके से फिर वो जो चीजें हैं वो Like to उनकी yeah, I'll just very quickly complete yeah. that as part of their own professional growth as well slacks, because जब वो उनके पास education ही नहीं है. तो मुझे ये बताएं कि with Abek, how you wanted to create like more employment opportunities for them. How and how difficult was the journey, number one? और क्या आपको जो community है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 12 million लोगों की आप बात कर रही हैं, were you able to find the right kind of people who would fit into that job role that you were looking at? Yeah, thank you. नूर, बात रिक्रूटमेंट तक ख़त्म नहीं होती. लॉट ऑफ पीपल कम टू मी कि हम लोग डेफ लोगों को हायर करना चाह रहे हैं because recently you might have seen बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक पॉलिसी आई. Every bank has started prioritizing this thing कि हमारा बैंक inclusive for PW with disabilities के लिए.
बट अगेन आई वुड से कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिक्रूटिंग देम, हमको हमें उनको एम्पावर करना है एंड देन वी हैव टू रिटेन इट, इट्स अ जर्नी। और द प्रॉब्लम इज इन दैट कि वो ये मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे हम लोगों को चीज़ फ्रस्ट्रेट करती है वो ये है कि इट्स नॉट दैट कि ये बच्चे परफॉर्म नहीं सकते और या इनके साथ कोई इशू है, दैट के द कंपनीज एंड द बिजनेसेस जहाँ पे या कॉर्पोरेट सेक्टर्स दे आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग कि हम इनको रिटेन भी करें फॉर अ लॉन्गर रन। ठीक है, वो यूजुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, यूजुअली हम जब बात करते हैं कि एम्प्लॉइंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हम कहते हैं कि चलो कंपनी में हम वी कैन शो द फिगर के सर्टेन परसेंटेज इंडिविजुअल्स हमारे यहाँ भी ऐसे हैं ड्यूटीज। लेकिन देर लाइक I don't know, there are very few organizations who actually hire them with the intention that we have to empower them and we have to retain them. Like I would like to share my personal experience. I remember the the very first employee we had like at a big house, and he's still working with us, and he started off with a very basic position. He didn't know about the financial management. He didn't know about कि एक बैंक में जाके डिपॉजिट स्लिप्स लिखते कैसे हैं, बैंक में जाके अमाउंट जमा कैसे कराते हैं, लेजर कैसे मेंटेन करते हैं, एंड सप्लाई चेन। नाउ ही इज मैनेजिंग 2 units of a big house, एंड एंड एचआर को भी वो साथ साथ देख रहा होता है और ये सब कुछ। और नाउ ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी खाओ में एक सिस्टम लेकर आए कि जहाँ पे प्रमोशन भी होती है, बोनसेस भी मिलते हैं आपको, और वो एक उनको ड्राइव करता है और फिर उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है कि हम इस दुनिया से आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, यूजुअली I would not mention the name of the bank. Obviously, I had got a chance to visit one of the banks, and she just because she knew my business, so the lady she shared with me that Ayesha, we have one deaf employee as well with us, working with us. And I was like कि यहाँ पे क्या काम करती है? She just said कि ये बस बैठती है और सीखती है। तो अगेन बात वहीं पे आती है, आर वी एम्पावरिंग देम? हम उनको स्किल सेट क्यों नहीं देते? और इस ये पॉलिसी लेवल तक बात जाती है, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है ना, आई वुड से नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। क्योंकि अगर आप जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं वो उस बंदे की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, अगर डेफ बंदा उस पॉलिसी मेकिंग के उस स्टेज ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा उसकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हम सारे पॉलिसीज तो बना लेते हैं, इन द एंड हम उनको रूल कर रहे होते हैं, हम उनको डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आपने ये पॉलिसी आपके लिए बेहतर है, और ये पॉलिसी हम गिफ्ट पैक करके उनको दे देते हैं कि इट वर्क फॉर यू। बट दिस इज नॉट द रियलिटी, एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट डजंट वर्क बिकॉज उनका कंसेंट ही नहीं होता या उनका इनपुट नहीं होता। या नो एब्सोल्युटली, और यही आप जो बात कर रहे हो ये इंक्लूजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें और एम्पथाइज करें, और हम ऐसी कन्वर्जेशंस, ऐसी सेफ स्पेसेस डेवलप करें जहाँ पे जो पीपल हु आर कमिंग इन फ्रॉम different backgrounds, and you're talking about people with disabilities, can actually come forward and share their experiences to make their life more financially empowered. They should be also become like a working member of the society. मुझे ये बताएं कि in terms of academia, what are a couple of suggestions? कितना important है for students to actually learn sign language? Should we be teaching it as a curriculum in school as well, so that the newer generation takes it up as a language and it's just really like another language? या सो इधर मैं यही कहूँगी कि साइन लैंग्वेज इज लाइक एनी अदर लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पश्तो, and about deaf culture, it's a cultural identity, and you like, and अभी तक हमने जितनी भी साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग्स डिलीवर की एट कॉर्पोरेट लेवल यूनिवर्सिटीज में, एंड सबसे पहले ऑब्वियसली इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें आनी चाहिए साइन लैंग्वेज। ये सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगी टू इंटरेक्ट विद डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग इंडिविजुअल्स, ये बहुत सी जगहों पे आपको हेल्प करती है। इवन समटाइम्स इफ यू आर बहुत से में
with learning disability, उनको भी पेरेंट्स को भी साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है टू डील विद देयर और टू कन्वर्स विद देयर किड्स and it's not difficult to learn sign language and I think it's a basic social responsibility कि हमें basic sign language आनी चाहिए और मैं सबको encourage करती हूँ specifically students को और मुझे लगता है आज अबे खाओ को यहाँ तक लाने में youth का बहुत बड़ा एक role है we couldn't have done it without them they literally embrace the culture and they literally love the concept and they visited again and again just to support the community. Obviously, we cannot compromise on the food we were offering, but I knew that they were coming to interact with my team and to enjoy, conversing with them and to, and even I've seen very young kids they specifically visit us rather than going to other brands कि ताकि हम साइन लैंग्वेज में वो एक एक्साइटमेंट होती है कि ऑर्डर करें सो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस का जो एक रोल है हम पूरा करें कि एक साइन लैंग्वेज को शोकेस करें कि वो जो बंदा या जो शख्स है जो साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है ये उसकी आइडेंटिटी है ही शुडंट बी ashamed of his Yeah, identity he shouldn't be afraid of his identity absolutely. he should be proud of his identity so this was the concept where people whenever they visit a big house, they have to order in sign language. They have to communicate in other person's language rather than ordering in, in like हम written में भी कर सकते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को बड़ा encourage किया कि आप sign language में ही order place करें. Absolutely. Aisha, I think I'll leave you there with this thought because I think this is such a great thought in which, you're instilling this sensitivity, creating this kind of a sensitivity that inclusion starts from home. जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे स्मॉल कोहॉर्ट्स में स्मॉल ग्रुप साइजेस में जब तक कि हम ग्रेटर एडेप्शन की तरफ नहीं जाएंगे और इस चीज को ओके बनाएंगे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस we just want to welcome you again on behalf of International Center of Excellence that any kind of intervention that you want to do with our children in terms of teaching them about sign language to create greater initiatives and interventions around inclusion, you are more than welcome to come in and speak as an academic partner. We would love to have you there, and we are strongly supporting these messages. The philosophy remains that your academic qualification is not going to shape or make you the professional that you are for the future. Currently, the values that employers are looking at, what stakeholders that you'd be working with are looking at is how sensitive you are to other people's needs. They're looking about initiatives which are very human centered, जहाँ पे आप अपनी वो साइड अपने वो एनालिटिकल स्किल्स अपने वो कंपैशन स्किल्स सिखा सकें जिसमें आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वो सामने आए सो वी रियली वुड लव टू सपोर्ट अ बिग हाउ एज अ सोशल Thank you. enterprise inclusion. We appreciate the amount of work that you are doing in building the community for any kind of research measures that you're also looking at. We love our academic department would love to interact with you, go into these research ventures, figure out wherever you need the support. Our students will be there to support you. Yeah. Thank you Thank you so so much. much for taking out time. If you guys wanna look more for Abhay, where should they reach out to you, Aisha? Yeah, just repeating this. Where should students reach out to you if they want to try the delicious food that you have? Where are you parked these days? I think we're having just a little bit of connectivity problems right now, but I do know for a fact that you are parked in Beria Phase 4 and also in F7. So just look around for the yellow food truck and you would find a Bikau. Aisha, thank you so much for taking out time for doing this Ice for Innovation session with us. Thank you. Take care.